help in making theories and laws. It provides subject of geography a sound philosophical and methodological base. सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आज के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को, एवरीवन एक्सेप्ट एंड अकॉर्डिंगली बिहेव, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट मेथड्स आर देयर ऑन द पेपर, ऑन द बुक. व्हेन यू आर स्टडिंग द ज्योग्राफी, आज के डेट में नहीं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन नहीं आता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्ड नहीं आते, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं आते, नहीं तो वही थ्योरीज को लेकर चलते. द डिफरेंट मैथमेटिकल perspective has been involved and it is on the surface level when we are watching. I said that to making a planning, it can be to an extent it is good, understood, planning के लिए, but for the development this theory cannot be completely. So हमने क्या देखा? What is the merits? Yes, tell me, what is the merit? Empirical observation, yes, completely experimental, and उसको that is ready to verifiable. Reducing the data and facts, and at the level of manageable you can do it. You can reduce the data and facts को manage कर सकते हैं. Estimation, interpolation, simulation, yes, for the different prediction, different forecasting, and help in understanding the locational theories of different. And then language of geography, language of economy, and other field, and help in making theories and laws, and then it is giving us best methodology. I said quantitative revolution in the temporal aspects. Quantitative revolution in the what I said that. So it has grown actually after the Second World War. Quantitative revolution grown after what? I said that first phase from the 1950 to 1963. First phase is from the 1950 to 1960, quantitative revolution. And इसमें हमने यूज किया simple statistics, SS. Understood? First SS means simple statistics, mean, median, mode, and all different kind of simple statistics. Then we have seen, yes, spatial science or spatial analysis. Understood? Spatial science. What I said that? Tell me. Yes. So studying a particular region. चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कौन सा स्टेट लेना चाहते हैं? वहाँ पे डाटा की कमी है तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो बिहार में क्वांटिटेटिव रिलेशन टेक्निक को यूटिलाइज करना, इट इज वेरी हार्ड. वेरी प्लेन डाटाज आर देयर. इफ एनी स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एनी स्टेट इफ आई एम टेकिंग, तो वहाँ पे हमें चलेंगे एंड विल डू द सम ऑब्जर्वेशन एंड देन विल टेक द डाटास, एम्पेरिकल डाटा. विच डाटा विल टेक? बिहार में एम्पेरिकल डाटा मिलेगा क्या? महाराष्ट्र वी कैन बी एबल टू गेट, गुजरात वी कैन बी एबल टू गेट इन द फॉर द इंडस्ट्री एंड द डिफरेंट. यस, सो बिहार में भी मिलेगा, बट इट इज लेस मोर ऑफ एग्रो बेस्ड एंड ऑल. सो आई से दैट बाय टेकिंग द डाटा आई ट्राई टू डू व्हाट इज ना एम्पेरिकल. यस, और एम्पेरिकल स्टडी करेंगे इस दिस रीजन का दैट आई से दैट इज एन स्पेशल एनालिसिस. यस और नॉट? और सपोज करो एक ही लेकर, स्पेशल एनालिसिस का मतलब है कि मैंने लिया आयरन स्टील इंडस्ट्री इन कर्नाटका, आयरन स्टील इंडस्ट्री इन व्हाट इज उड़ीसा एंड ऑल, तो ये भी क्या है? स्पेशल एनालिसिस. बट डिफरेंट एलिमेंट्स को भी स्टडी करना इन अ गिवन रीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स टू स्टडी इन अ गिवन रीजन बाय द एम्पिरिकल मेथड, साइंटिफिक अप्रोच. यस, एम्पिरिकल मेथड मीन्स वी आर गिविंग द एविडेंस, एक्सपेरिमेंट इज देयर, देयरफॉर इट इज नॉट अगेन स्पेशल science or spatial analysis. Another one we'll see descriptive analysis. Yes, हमें देखना है उस रीजन में किस पर्पस से, what are the things which is available, complete description method will have to utilize. Understood? Another I said that multivariate analysis. So in a given region, different kind of variables are available. With the help of statistic, we'll have to analyze it. So in the 1950s and 60s,
we started and I said that क्या हमने देखा simple statistics, social science, sorry spatial science and descriptive analysis. Another one I said that multivariate analysis, and then which one? Probability model. Which model? Which model? Stochastic model. Probability model it is known as what? सारा पहले एक example दे चुका हूँ stochastic model. That is I said that probability model, and then we are able to get what is enough? Supply chain model. Which model I said that? Supply chain model. Yes, Saurabh, tell me. If you want to put your one factory in Delhi, क्या आप supply chain model देखना चाहोगे? If you want to put factory will be for the business purpose या for the social welfare? Social welfare कम होगा, more of business. तो आप क्या देखना चाहोगे? हर कहीं भी बिठा दोगे? There should be a supply. Yes. Why do the institutes are there? There is an inputs are coming and then output are inbound shipment and outbound shipment. The people are coming and also going. Why not in the other place in Delhi they are opening? They can be able to come. So you will open in a particular industry nearby where you can be able to get what? Inbound and outbound is going on. Yes or not? Supply chain for your raw material and for your market. So you will try to put your industry or factory or your shop. How? On the basis of which model? Supply chain model. तो वहां जाने से पहले टोटल वहां पे क्या करोगे आप? You will study the demographic attributes. In that region, how do the population is coming, and then you can be able to analyze it, and then where the different nodes are there. Yes, node of different kind of what organization which are helping to give us what raw material and then to the market. This node is the specialization for the market. This node is specialization for giving us what raw material. पूरी दिल्ली का if you see कौन सा market है यहाँ पे? हाँ, गफार मार्केट. ये रॉ मटेरियल साइट है. कैसा साइट है? अब आज के डेट में वो बेचने वाला भी बन चुका है. सो मतलब so I said that supply chain model. Getting my point? So in the 1952-63 we have used which are simple statistics, spatial science, spatial analysis. Understood? Yes, tell me. Swati, tell me, what is spatial science? Spatial science or spatial analysis. To read a variable scientifically through the empirical method in different regions, or read the particular region, different variables with the empirical method, scientific method, spatial. अब इतना समझा देने के बाद ही कभी आपको स्पेशल एनालिसिस पे आ जाए शॉर्ट नोट, आप बहुत लिख सकते हो. यू कैन यूज एरियल डिफरेंशिएशन. यस और नो? यू कैन यूज सिस्टमैटिक एनालिसिस. अंडरस्टूड? यू कैन राइट अ लॉट. Understood it? Spatial science. Another I said that which science? Descriptive analysis, and then total mathematical purpose and all it is utilized. Multivariate analysis, different kind of variables को आपको analyze करना in that given region, and then probability model, and then supply chain model. And who has given this? Ullmann, American geographer Ullmann. Understood? Thereafter 1960s में आए. In the period of 1960, what is the meaning of ideographic and nomothetic? Ideographic is aerial differentiation. Ideographic is, and nomothetic is scientific method. Nomothetic means scientific method, systematic analysis or giving a law. It is in a generalized approach. It is in a which approach? Yes, nomothetic is giving us a general law. I want to make a law. But in the case of, I said that ideographic, study the unique quality of a region. Study the ideographic means aerial differentiation. Study the unique quality of region. This unique, this unique, this unique, this unique, that become a aerial differentiation from the other. And this unique, this unique, this unique.
same soil, same vegetation, that becomes systematic analysis. So ideographic is studying the unique quality of a region, and then Mr. Who? Nomothetic is what? Scientific study. Understood? Systematic analysis. To give a generalization, to give a law. Understood it? So in which period? 1960s में क्या किया? Replaced ideographic by, तो scientific चाहिए ना, quantitative relation is a scientific. So replaced ideographic, एक point याद रहेगा, yes or not? Temporal aspect, 50s to 63 and then 60s में आते ही, then we also removed whom? Ideographic removed and coming of what? Nomothetic, and वो आप देख सकते हैं Stewart's which rule? Empirical mathematical rule, अभी बताया था हमने. And which one I said that? Iij equals to K into Pi into Pj upon Dij is whole square. Another one we have seen, William Wunsch social physics rule. What is the meaning of social physics? Use of maths for the society. Social data. Use of maths, use of physics to study the social data, population, religion and all. The social physics. Understood? So different statistical method. The use of maths, use of what? Different statistical methods to study whom? Datas of societies. It is known as social physics. और अभी हमने क्या बोला? एक फॉर्मूला बोला, अभी बोला था मैंने, VI equals to what I said that? PJ, VJ ले लो, कोई भी ले लो, VJ, population at J is equals to, population potential at J equals to PI, means population of I, and then upon Dij. How much distance from this? Who has given this? William Wunsch. Gibbs least effort. Principle of least effort. And what is this? Principle of least effort? Yes, tell me. F is inversely proportional to rank. Frequency is inversely proportional to rank. Understood? Thereafter I said that Hager-Stent stochastic model. And then what is the stochastic model? Yes, tell me. Probability. Yes. Hager-Stent has also talked about. Yes, tell me, how will he say the word innovation diffusion? Innovation diffusion. What is the meaning of innovation? Innovation समझते हैं? Diffusion of innovation. Innovation diffusion. कैसे होगा? आज के डेट में FDI आ रहा हमारे यहाँ, आ रहा है या नहीं आ रहा? And possibly they are also bringing some their technology to India. Yes or not? For the production method. And then we are purchasing some kind of what? Planes and different kind of it. और उसको हम लोग reverse engineering से we started understanding what is the methodology. Understood it? So migration of different things help in what? Innovation diffusion, and can I say spatial diffusion of innovation? Can I say? तो जितना हम लोग जिस बेटर कंट्रीज के साथ हम अपनी रिलेशन रखेंगे, इफ आई पुट इन अ बेटर रिलेशन विद द डेवलप्ड कंट्री एंड रशिया एंड ऑल, इससे लेंगे तो उतना ही हमें टेक्नोलॉजी हमारा इंक्रीज होते जाएगा. स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. गेटिंग माय पॉइंट? सो कैसे मुझे पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी मेथड से, स्टोकेस्टिक मेथड, यस और नॉट? तो जितना हमारी इसके साथ जितनी हम इंटरेक्ट करेंगे, दैट मच इंटरेक्शन विल लीड टू, अब जितने ही वीक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? मेरी बात समझ में आ रही है? सो इंटरेक्शन इन बेटर ग्रुप्स, सिंपली आई सेड दैट. नेक्स्ट वन आई सेड Chorley and Haggett. What he has given? Multivariate analysis. Understood? In which period? 1960s. Ullmann in 1950 to 1963. Thereafter I am talking about who is the best one in the field of quantitative revolution. Who were the propounder of quantitative revolution? H word is very much important. Haggett. Understood? Harvey, Chorley, and Bunch. Yes, Haggett,
हार्वे एंड चोरले एंड बंच। क्वांटिटी इनकी बहुत ज्यादा है, याद रहेगी क्वांटिटी टेक्निक में हु आर देयर। हैगेट बहुत होता है एवरी मॉर्निंग, एंड हारने वालों की संख्या ज्यादा होती है, जीतने वालों की संख्या कम होती है। क्वांटिटी, चोर की भी संख्या ज्यादा हो गई है, क्वांटिटी। Another is in a bunch. What is the meaning of bunch? Bunch of. It is also quantity. So can you remember which are the geographer who are involved in the propounder in the field of what? Quantitative revolution? Yes? किसकी ज्यादा है? Yes? Haggett, Morning, Harvey, Chorley, Bunch. Next, if I'll talk about Christaller was the first who has utilized this quantitative revolution. Christoller's central place theory. He was the first जिसमें आपको he has principle given, market principle, administrative principle and different principle he has given, and the word of K utilized. Understood? 3, 4 and 7. Understood? Some जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, then you can come to know about it. So again the mathematical utilization, first who has done? Yes, tell me. Another is in a Weber. And who is Weber? Industrial location theory. Maths utilized. Very good. लगे रहो मुन्ना भाई, ये वेबर वो वेबर है। क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड वो वेबर है, WEBER. This is Weber. He has given crop combination method. अभी एग्जांपल ले रहा था ना फर्स्ट डे व्हेन आई वाज टीचिंग यू एरियल डिफरेंशिएशन, देन आई सेड दैट बिहार और यूपी के लिए हमने क्या बोल रहे थे? क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड. एंड ही हैज गिवन द आइडिया ऑफ द फॉर्मूला for crop combination sigma d square upon n. Sigma d square upon, but originally it was like I said that sigma d square upon n. D means deviation and n means how many crop combination in that region. 1 crop combination, 2 crop combination, 3 crop combination. तो इसको निकालने के लिए, और जितना ज्यादा इसका वेरिएशन कम होगा, जितनी कम डेविएशन होगी, वो ये भी आप जानते हैं ना, आपका मार्क्स हमेशा डेविएट हो एंड यू आर गेटिंग व्हाट इज, सपोज 100 में से यू आर गेटिंग जस्ट नियर बाई 80-90, देन चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी हाई. एंड समटाइम्स 80 एंड देन सडनली यू आर 20 एंड देन 30, वेरिएशन इज मोर, डेविएशन इज मोर. तो हाई डेविएशन इज गुड और लो डेविएशन इज गुड? टेल मी. लो डेविएशन. तो जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं, व्हेन आई विल डू द एग्रीकल्चर, सपोज 2 क्रॉप कॉम्बिनेशन, तो 2 क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा इन ए रीजन? आई सेड 100/2, तो स्टैंडर्ड मिल गया मुझे 50. 3 क्रॉप कॉम्बिनेशन में मुझे क्या मिलेगा? यस टेल मी. चाहे 4 क्रॉप कॉम्बिनेशन मैंने, 3 हमारे इंडिया में 3 बहुत ज्यादा है. 100/2